जय जगन्नाथ। हे गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। 3-4 दिन हो गए जब से मैं अपना पौंडीचेरी राइड कंप्लीट करके आया हूँ। बेसिकली मैंने मानसून राइड किया था फ्रॉम बैंगलोर टू पौंडीचेरी, उसके बाद मैं वापस आया था बैंगलोर। आने का टाइम बहुत बारिश हुआ था, इसलिए बाइक अभी एक्सट्रीमली गंदा होके है नीचे गराज में। आई थॉट ऑफ गिविंग इट टू ए नॉर्मल सर्विस सेंटर जहां वो गाड़ी को धो देंगे, बट देन आई डिसाइडेड कि जब से मैं गाड़ी एक्चुअली लिया हूँ डिलीवरी, आई हैव नॉट डन माई हैंड्स डर्टी। मैंने चेन खुद से साफ किया है, ना चेन फ्रंट स्पॉकेट्स को खुद से साफ किया है, ना इंजन भी अच्छे से साफ किया है। सो आई थॉट ऑफ कि आज मैंने एक छुट्टी लिया था, सो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू स्पेंड द होल डे विद द बाइक, एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे विद द बाइक, सो दैट आई कैन गेट हर क्लीन एंड ऑल्सो पैम्पर हर, क्योंकि द वे यू ट्रीट योर मशीन ट्रीट्स यू द सेम वे। सो लेट्स गो स्टार्ट द एंटायर डे एंड देखते हैं कि मैं exactly कैसे प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। द रीजन बीइंग कि मैं हार्डली 50 to 70 रुपीज खर्चा करूंगा इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग माई बाइक। सो स्टे ट्यून्ड, सी कि मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, एंड या लेट्स स्टार्ट द डे। Muyo está calor. Muyo está calor. Muyo está calor. Está calor. Muyo está calor. Está calor. Muyo está calor. So guys, that was the whole video when I showcased you how exactly मैंने बाइक को अपना धोया था। हार्डली मैंने कितना 160 रुपए खर्चा किया, 60 रुपीज फॉर द डीजल एंड 100 रुपए मैंने धोने वाले को दे दिया। 160 रुपए में, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जैसे बाइक साफ किया है, आप लोगों ने तो एक बार देख भी लिया, तो लाइक आई वाज क्वाइट हैप्पी विद माय ओन परफॉर्मेंस। आप कमेंट भी कर सकते हो कि आप जब बाइक धुलवाते हो तो आप भी क्या प्रिकॉशंस लेते हो, क्या मेजर्स आप फॉलो करते हो। Apart from that, I would like to say thanks a lot for watching this video. Do subscribe to my channel और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ये शेयर भी कीजिए। अभी तो मानसून चल भी रहा है, आप कहीं अगर राइड भी कर रहे हो तो प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट यू कैन। And then as always I say, stay humble in life and read on to the things that you deserve. This is Kunal Vlogs signing off.